Yeah, good morning, everyone. So let's wait for 5 minutes, let everyone join, then we will start. Yeah. So, so before moving forward, first just tell me what is this diagram? Which UML diagram is this? Use case diagram. Yes. So is it correct or is there anything wrong here? Is anything wrong here in this diagram? कॉम्प्लेक्स तो चलो फिर भी ठीक है सौरभ, वो तो बात की बात है। सबसे मेजर एक इशू है इस डायग्राम में। पेमेंट मेथड जनरलाइजेशन, नहीं ये तो ठीक है, उसकी कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, लीव दिस डायग्राम। इसमें बताओ, इसमें बताओ, इज देयर एनी इशू इन दिस डायग्राम? See, what I have seen is a lot of you are making class diagrams right, package diagram भी सही है, activity भी ठीक ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, but majority of you are making the use cases diagram wrong. Okay, and what is the basic thing that you are missing is you are trying to connect two use cases through this generalization. Okay, maybe this is a directed association. The student must have thought that this is a directed association. Okay, and what he's trying to say that he is a customer, he visits a mall, then he goes to a bookstore, then he selects a book, then he takes the books to the cashier, then he does the checkout. So basically the student has shown here the process or the flow किस diagram में बनाते हैं हम लोग, in which UML diagram we show the flow, we show in the activity diagram, right? Use cases diagram are the simplest diagram. Here you just have to show there is an actor, he will do this work, doesn't matter in which order he will do. Order आपको specify नहीं करना है कि वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, because maybe you have thought that this is a directed association, maybe you have thought that this is a directed association, but on paper it looks like this is a generalization symbol. This is a parent class, उसका child class है ये,
Now this is a parent class, उसका child class है ये. Now this is a parent class, उसका child class है ये. Getting it? And while teaching you use case diagram, have I ever told you that you have to use this directed association to connect customer from the use case? मैंने बताया ऐसा? नहीं बताया ना, तो खुद से क्यों कर रहे हो सब? See, the use case diagrams, a lot of you are making wrong. 30 to 40% people I've seen in their assignments, they are making it wrong, and this is the only thing that they are doing wrong. Complex तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चल जाएगा. This is the main issue that you guys are doing. You are trying to show the flow of the use cases. That पहले ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है. This is not the concern of a use case diagram. Use case diagram is the simplest diagram. Here you will show one actor. What this actor can do, you will show through normal association that he can do this, he can do this, he can do this. In which order he is doing this, we are not concerned. How he is doing it, also we are not concerned. ये सारी चीजें हमारे concern की नहीं है. We have seen a lot of examples for use case. ना रुको, let me show you. Why I am telling you this is because next week you have your lab exam. Okay, so अभी तो भले ही, even if you are making partial diagrams correct or full diagrams correct, I give you some marks, 7, 8, 9, 10. I give you some marks for your continuous assessment, but in the lab exam you will not get it if you'll do such kind of mistakes. Wait a second. See, these are some of our use case diagrams, right? ये हमने use case diagrams के वक्त ये slides देखी थी. Anywhere you are seeing that इस use case के बाद इस use case में जा रहे हैं, इसके बाद यहाँ जा रहे हैं, इसके बाद यहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है इसमें? Can you see anything? Any direction? Take this example. इसमें कोई diagram दिख रहा है? This is also looking a complicated diagram because of all these arrows, etc. But there is no control flow that कौन सा use case किस तरफ जा रहा है, because that is not our concern. Okay, whatever relationships I have told you in a particular diagram, for example, in a use case diagram, I have told you only this is the directed association which you have to make between user and a use case. These are generalizations or inheritance that you can either show for a user or you can show for a use case. Then you have this include and then you have this extend. Only these 4 things I have told you. बस इन्हीं 4 चीजों से डायग्राम में मुझे दिखने चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगा देना है. Fine. So before, why I am telling you this, because this is a major mistake. Some mistakes are acceptable. Okay, for example, I've given you one question, 10-12 line English में लिखी हुई diagram, for example, in the lab diagrams which I give you. Suppose that diagram has to be converted into a UML diagram. That English statement question has to be converted, that case study has to be converted into a UML diagram. And your understanding is a bit wrong. For example, you have missed some use cases, you have understood the question or you have misunderstood the question. So these kind of mistakes are acceptable to me, no issues. वो सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. But if you damage the basic structure of a diagram, then you will get 0. I am telling you. Diagram के सोल के साथ खिलवाड़ नहीं करना है कोई भी. Getting it? That is a very major mistake in the use case diagram, जो अगर एक दो बच्चों ने किया होता तो समझ आता. Majority of you are doing that. तो इसका सिंपल सा रीजन है, क्लास में टेंशन you guys are not paying. Because I have shown you all these diagrams और इसमें कहीं भी ऐसा कोई एरो नहीं दिख रहा है किसी को भी. Because अगर एरो इसी में बना दोगे तो एक्टिविटी डायग्राम क्या करेगा, वो भी तो यही काम कर रहा है. Got my point? So before your next week's lab, ये सारी PPTs अपलोडेड है आपके पोर्टल. Just go through all the diagrams. हर डायग्राम में क्या क्या रिलेशनशिप पढ़ाया है और क्या क्या लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, सब रिवाइज करके एग्जाम में बैठना. Got it? Any doubts to anyone on this? पूछना है किसी को और यूज केस से रिलेटेड? फाइन. सो जस्ट रिवाइज, है ना, बिना पढ़े मत एग्जाम में बैठ जाना. जस्ट रिवाइज बिफोर व्हाट यू आर मेकिंग. ओके, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस मिस्टेक. नेक्स्ट वीक, Raj, B1 will have on Tuesday and B in your lab only. B1 will have on Tuesday and B2 on Thursday.
till activity diagram will be your syllabus. Use case diagram, class diagram, package diagram, interfaces, what we have seen, and activity diagram. Okay, till this point will be your syllabus. इसमें से questions आएंगे. Basically सब में से कुछ ना कुछ होगा. Okay, there will be around 4 questions covering all of them. And your timings are exact 9 to 11. Okay, exact. You will get 2 hours. Questions will be such that they can be completed in 2 hours, Raj. And everyone, exact at 9, the question paper will be uploaded in your lab course only. Okay, and by 11:30, I need the assignment or your paper to be submitted. उससे ज़्यादा देर करोगे, so nothing will be accepted. 9 to 11 is your exam time. Half an hour extra I am giving you for scanning and uploading whatever. Since it is a test, right? अगले दिन नहीं सबमिट करना है. 2 घंटे का टाइम है, उसी में करके देना है. And don't share your assignment with anyone. किसी ने भी कॉपी किया, I will ban you from entering the lab for the whole semester. Just keep that thing in mind. And Umar, you don't attend the classes. Your class attendance is also very less, and your lab attendance की तो चलो बाद में बात करेंगे. Mohammad Umar, why you are not attending the classes? Any issues? See, I know every one of you. I know every one of you. किसका क्या attendance record चल रहा है, कौन क्या assignment submit करता है. I keep a track of everyone. So don't think that ऑनलाइन चल रहा है बच के निकल जाओगे, लास्ट में सब हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं. लास्ट में सडनली सरप्राइज मिलेगा एंड सब में डिवार कर दूंगा सीधा. See, it's your responsibility, Umar. Okay, everyone, be very critical about your attendance. और अटेंडेंस से ज्यादा बी क्रिटिकल अबाउट योर असाइनमेंट्स एंड टेस्ट. मोहम्मद, तुमने दोनों असाइनमेंट और टेस्ट भी अभी नहीं दिए. आई थिंक तुमने असाइनमेंट दिया, टेस्ट नहीं दिया, दोनों नहीं दिया, ऐसे ही कुछ है. क्लास में अटेंडेंस का चलो मान भी लिया, नेट का इशू है, बट असाइनमेंट एंड टेस्ट इफ यू आर मिसिंग तो बेटा फेल हो जाओगे, है ना. आई कैन नॉट सेव यू. देन तुम्हारी अटेंडेंस भी नहीं रहेगी, इंटरनल भी नहीं, दो चलेगा. चलो, सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन. किसी को कोई और इसमें डाउट है, इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हो? चलो फाइन. सो कीप these things in mind. Okay, just the basic thing is maybe your diagram understanding could be wrong, that is acceptable. That is not a issue. सबका अटेंडेंस थोड़ा सा भी गलत दिखा रहा होगा, पर मेरे पास सबकी करेक्ट अटेंडेंस है, तो उसकी टेंशन मत लो. कुछ जो है, you guys keep on attending your classes. I have the attendance for everyone. जिसके जो क्लास नहीं कर रहा है उसको पता होगा, वो सडनली लास्ट में डिबार हो जाएगा, तो उसको पता भी चल जाएगा. सो देयर इज नो इश्यूज. इफ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस, बी वेरी श्योर पोर्टल में कुछ भी दिख रहा हो, आई विल टेक केयर. चलो, so now so we have completed the activity diagram, right? So initial diagrams, we have seen the package diagram, we have seen the class diagram, we have seen the object diagrams, right? Component diagrams and deployment diagrams are your last module. ये दोनों syllabus में नहीं है. In the behavioral diagrams, we have seen the use case diagrams, we have seen the activity diagrams. Okay, state machine diagram is the next module. अब पढ़ेंगे हम लोग interaction diagrams. Okay, now only interaction diagram is remaining. Interaction diagram में basically ये भी नहीं है सिलेबस में, ये भी नहीं है सिलेबस में. You have to read only sequence diagrams and communication diagrams. These are the two types of interaction diagrams: sequence diagrams and communication diagrams. Okay, after that your next module is state machine diagrams, और उसके बाद का last module है component and deployment diagrams, and your syllabus is finished. बस इतना ही है. Fine. So okay, so see, in behavioral diagrams, how many diagrams we have seen? We have seen the use case diagram where there was one actor, or you can say use case diagram was an abstract view of your whole system. Very simple abstract view. It was just showing you that there is an actor. I'll tell you later, Raj. Okay, but till this module, what we are doing right now, this will be your syllabus for midsem. Midsem से पहले जो आखिरी क्लास में जहां तक पढ़ाऊंगा सब सिलेबस midsem, और एंड सेम में तो सब कुछ आना ही है. I think last 2 modules
दैट स्टेट डायग्राम एंड कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ये नहीं आएगा मिड सेम में, मतलब ये नहीं दूंगा मिड सेम में। बाकी इसके सिवा ये जो मॉड्यूल अभी कर रहे हैं, ये जब खत्म होगा, टिल दैट पॉइंट यू हैव इन योर मिड सेम। ओके, मींस द टाइम वी विल कंप्लीट इंटरेक्शन डायग्राम, टिल दैट पॉइंट इज योर मिड सेम सिलेबस टिल नाउ। कोई चेंज होगा तो आई विल टेल यू। Your mid sem is from 5th October, right? 5th October का मतलब हो गया 1 2 3 4, वी हैव 4 क्लासेस। 5th October से है ना मिड सेम? एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर तो मिल गया होगा। नहीं, शेड्यूल नहीं आया है, बट एकेडमिक कैलेंडर आई थिंक। अच्छा, एकेडमिक कैलेंडर नहीं मिला है। Which questions, Harshit? See, questions will be like, I'm not sure about your mid sem pattern right now, but अगर जैसे नॉर्मली होना है, अगर ब्लैक बोर्ड पे ही होना है चीजें, तो जैसे टेस्ट में आ रहे क्वेश्चन वैसे ही आएंगे। ओके, जस्ट लाइक हाउ यू हैव गिवन योर फर्स्ट टेस्ट, एक टेस्ट और लूंगा अभी मिड सेम से पहले, वन मोर टेस्ट आई विल टेक, है ना? तो उसी टेस्ट के क्वेश्चंस पे आएंगे। अगर दिस वुड हैव बीन अ थ्योरी सब्जेक्ट तो सीधे सीधे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए आते, बट सिंस दिस इज नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट, सो द concepts will be checked. We'll see that later. Okay, there is one academic calendar actually. I'll, okay, just wait, I have to restart the internet. I'll share with you the academic calendar. Wait, let me restart. Yeah, so am I audible? So I'll send the academic calendar to you, CR, okay? You must देख लेना। I think from 5th October you have your midsem, and from 1st December, as far as I remember, you have your end semester exams. तो जहां तक मिड सेम भी ब्लैक बोर्ड पे ही होना है। ओके, सो वन मोर टेस्ट आई विल टेक बिफोर मिड सेम। सो जैसे दो same kind of questions will be there for your mid sems also, and most probably for your end sems also. Okay, see, if you have understood one thing correctly, okay, if you have understood what is the use case diagram, what are the things you can use that, that is okay, the topic is covered. You don't have to read anything else. Whatever I'm teaching you, that is more than enough. Even I'm teaching you in a lot more depth than required. ओके, बस इतना ही कर लो, बहुत है। बहुत ज्यादा हाथ पैर ऐसे मारने की जरूरत नहीं है, बट इतना सही से करो, है ना? डोंट जस्ट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपलेस्ट डायग्राम लाइक अ यूज केस डायग्राम। ये तो बहुत ज्यादा ग्रेव मिस्टेक इफ यू आर डूइंग दैट। चलो, नाउ सो लेट्स बिगिन विद द इंटरेक्शन। या दैट just read, okay, just read up the ppts well before attempting the questions, because they will be tough, and I'll give you those kind of questions only for your mid-sem and end sems. See, one thing I can assure you, if you're not attending my classes, okay, if you just log in and you just sleep, I can give you in writing, you cannot pass this. Even the simplest subject, you cannot answer my questions, that I can assure you, in mid-sem and end sem. So either you are watching the classes, or even if you are watching the recorded sessions, that will also work. Okay, if you are watching the recorded lectures, that will also work, but you have to watch the सिर्फ पढ़ो तो समझ नहीं आएगा पीपीटी लिखा क्या है, because in the PPTs I don't give points or lot of points. I mainly focus on the diagram parts and then explain. So you have to listen the classes. Either you listen it live, recorded lectures है ना सारे अर्जुन, इन लोग ब्लैक बोर्ड ये ज्वाइन करते हो, वहां पे ऐसे 3 डॉट्स बने होंगे ऊपर, 3 बार्स होंगे, उस पर क्लिक करोगे, सो यू विल हैव द रिकॉर्डिंग्स ऑप्शन।
जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग्स, ओके? बिना पढ़े या सिर्फ पीपीटी देख के मत आ जाना टेस्ट देने, कर ही नहीं पाओगे, आई कैन अश्योर यू, कोई चांस ही नहीं है। बिकॉज माई क्वेश्चन यू विल नॉट फाइंड और इंटरनेट सर्च करके या फिर किसी बुक में लिखा है कहीं। यू हैव टू अटेंड द क्लासेस, तभी आंसर हो पाएंगे। और सब ये पहले टेस्ट से सबको पता चल भी गया होगा आई थिंक। Okay, the level of the difficulty will keep on increasing only. The simpler the subject, the harder the paper will be. Keep that thing in mind. So watch the classes. Either you attend it live or if internet issues, so watch it recordings. Okay, watch the recordings later. That will also work, no issues. But देख लेना। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में मुंह उठा के मत आ जाना, देख के पढ़ के आना। ठीक है, किसी को और कोई डाउट? एम आई क्लियरली ऑडिबल या कुछ ऑडियो में इश्यूज है, बफर वगैरह हो रहा है? आई एम क्लियरली ऑडिबल। विच टाइम डायग्राम? Which time diagram, brother? Some time diagram is not there means? किसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, टाइम डायग्राम नहीं है ये। दैट इज नॉट इन सिलेबस। फॉलो योर कोर्स फाइल, ओके? जो कोर्स फाइल में लिखा है वही सिलेबस है हमारा। बेसिकली जो पढ़ा रहा हूँ वही सिलेबस है। ठीक है, क्लियर भरत? कोई इशू है? ठीक, चलो। सो नाउ लेट्स सी द इंटरेक्शन डायग्राम्स, ओके? So see, in the behavioral diagrams, we have seen two diagrams till now. First is the use case diagram. Second is the activity diagram. So what use case diagram shows you? It shows you an overall abstract view of the system, a very basic abstract view of your system. They are basically used to create other diagrams or to support diagrams. Okay, जैसे UML diagram is kind of a rough work. जो मेन काम शुरू होने से पहले हम लोग कर लेते हैं। There is an actor, he can do this, etc., etc. यूज केस डायग्राम doesn't shows you in which order the actor is going to perform these tasks. वो कैसे भी कर सकता है, बट वो करेगा। और ये टास्क होंगे कैसे? हाउ इन द बैकग्राउंड these tasks will get executed. For example, you have created this diagram for an ATM transaction and you have shown there that one use case is cash withdrawal. So अभी cash withdrawal कैसे होगा, we are not concerned. We will just show there is an actor and he is doing cash withdrawal. That is the only work that we have to do. If you want to show that how this use case is actually getting executed or how this cash withdrawal will actually take place, what diagram we will use? Which diagram we will use? Class diagram. Activity diagram, right? Kshitiz, Saurav. If you want to show that how this particular use case is getting executed, if you want to show the flowchart of an activity, if you want to show the flowchart of a use case, we use activity diagrams. Class diagrams are the structural diagrams, right? I'm talking about behavioral diagrams right now. Class and object diagrams are structural diagrams, right? They are mostly related to the structural or the coding part. That okay, while coding my whole software, I need these classes, I need these packages, I need these objects. Got it, Saurav and Shirij? Right? Class diagrams are structural diagrams, static. Okay, they are more towards the coding part. The actual implementation में कौन-कौन सी classes we are going to use. If you want to show any flow chart, any activity, how that activity is happening, if you want to explain a use case of a use case diagram, you go for activity diagrams. Now the third type of diagram is the interaction diagrams. Here the interaction का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। तो कौन इंटरेक्ट करेंगे? When I say a behavioral diagrams, मैं किसकी बात करता हूँ? Who is the main hero of our movie in a behavioral diagram? Why a diagram is a behavioral diagram? I have told you in this one or two class back also. Why we say that activity diagram is behavioral diagram?
use case diagram is behavioral diagram, and class diagrams are structural diagrams, static. What is one thing that is moving inside a behavior? User, or more technical word would be, okay, objects. Yes, sort of right. A diagram is behavioral only because you have the objects, right? In the use case diagram, the objects were the actors who were interacting with the system. In the activity diagram, we have shown the object status, है ना? हर activity के पास एक object status बना सकते थे ऐसे rectangular box में कि ये मेरा object है invoice, इसका status है इस वक्त created. So we can show the status of object changing at every point of an activity diagram. Now interaction diagram says that I have to make interaction between my objects. इंटरेक्शन का मतलब है अब चीजें बात करेंगी, कौन बात करेगा? एक बिहेवियरल डायग्राम में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही हैं जो मूव कर सकते हैं, सो इसलिए एक ऑब्जेक्ट ही दूसरे ऑब्जेक्ट से बात करेगा. Got this point? This is the only simplest meaning of interaction diagram, that now I want to show that my objects of the system are interacting. कोई प्रोसेस नहीं एक्सप्लेन करना है कि ये कैश विड्रॉल ऐसे हो रहा है, ये पूरे सिस्टम का एब्स्ट्रैक्ट व्यू नहीं देना है कि एक यूज एक्टर है जो यूज केसेस से इंटरेक्ट कर रहा है. अब ये सारी चीजें नहीं करनी. नाउ हमारे सिस्टम में, इन अवर सिस्टम, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स वी हैव एंड हाउ दोस ऑब्जेक्ट्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. ये ऑब्जेक्ट इसको मैसेज सेंड कर रहा है हेलो, ये ऑब्जेक्ट इसको रिप्लाई कर रहा है ओके. ऑब्जेक्ट्स बात कर रहे हैं आपकी. गॉट दिस? दिस इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम्स, that now the objects will be interacting with each other. अब इसके दो टाइप होते हैं इंटरेक्शन डायग्राम्स के. One is the sequence diagrams, other is the communication diagram, या कहीं कहीं इसको collaboration diagram से बोलते हैं. You can call it anything, collaboration diagram, either communication diagram or collaboration diagram, and the second part is the sequence diagram. So these two things we have to see, and after that interaction diagrams will be over. थ्योरी की बात नहीं करते हैं, सबसे पहले लेट्स सी द रियल एग्जांपल. ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कम्युनिकेशन डायग्राम. ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड नाउ ऑब्जेक्ट्स विल बी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को मैसेज पास करेंगे. तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है, ये सारे क्या हैं? क्लासेस हैं कि क्या है? दीज आर योर ऑब्जेक्ट्स. So see, this is the example of a collaboration diagram. ये कैसे बना है, इसकी डिटेल्स क्या है, that we will see later. बट पहले एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं. दिस इज माय ऑब्जेक्ट बटन. देखो ये टेलीफोन के लिए एक इंटरेक्शन डायग्राम है. हियर आवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज बटन एंड ही इज सेंडिंग अ मैसेज टू द डायलर ऑब्जेक्ट. क्या मैसेज सेंड कर रहा है? डिजिट कोड. एक मैसेज सेंड कर रहा है डायलर ऑब्जेक्ट को. देन द डायलर ऑब्जेक्ट, हाउ आई एम सेइंग दैट पहले यही मैसेज सेंड कर रहा है बिकॉज मैसेज के आगे नंबरिंग पड़ी हुई है. मैसेज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट इन अ कोलैबोरेशन डायग्राम. इंटरेक्शन डायग्राम्स के दो टाइप है, एक कोलैबोरेशन डायग्राम, एक सीक्वेंस डायग्राम है. दोनों का काम एक ही है, ठीक है, बट रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिकली व्यू दोनों का अलग है. एंड इन अ कोलैबोरेशन डायग्राम कौन सा मैसेज पहले, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है ना, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे ऑब्जेक्ट्स. सो व्हिच ऑब्जेक्ट इज सेंडिंग द मैसेज फर्स्ट, व्हिच ऑब्जेक्ट इज सेंडिंग द मैसेज सेकंड, ये पता चलता है जो नंबरिंग है उससे. दीज नंबर्स टेल यू कि कौन सा मैसेज कब गया है. Fine. So based on this numbering, I can see that this is the number 1, means the button 1, और direction ये है, direction ये है मैसेज की. So based on this numbering of message, I can say that the button object is sending a message to the dialer object. ठीक है? User might be pressing the button. So whatever the digit that is pressed, that digit is sent as a message to the dialer object. Then what is the second message here? कौन किसको भेज रहा है? Which object? Dialer object to speaker object. क्या मैसेज भेज रहे हैं? emit to, राइट? मतलब जो भी बेसिकली क्या हो रहा है, फोन में नंबर डायल कर रहा है ना, और फोन में जैसे किसी को कॉल करने के लिए नंबर डायल करते हैं, वो चीज हो रही है यहाँ पे. तो वो चीज कैसे हो रही है? देयर इज अ बटन ऑब्जेक्ट. वो जब बटन प्रेस हो रही है, या यूजर जब बटन प्रेस करने की कोशिश करेगा, तो वो बटन ऑब्जेक्ट डायलर ऑब्जेक्ट को एक मैसेज सेंड करेगा दैट दिस डिजिट हैज बीन प्रेस्ड. अभी डायलर ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीकर ऑब्जेक्ट को एक मैसेज सेंड करेगा, एमिट दी टोन. टोन आती है ना जब फोन में कोई नंबर प्रेस करते हो तो एक टोन आती है. सो दैट टोन इज सेंट एज अ मैसेज टू द स्पीकर ऑब्जेक्ट. सो ये हमारा सेकंड मैसेज है.
व्हाट इज द थर्ड मैसेज? कौन किसको भेज रहा है? dialer to display. Based on this number, you can see that the third message that is sent is from dialer object to display object. क्या हो रहा है? Display the digit. सबसे पहले बटन प्रेस हो रही है, जो बटन प्रेस हुई उस डिजिट को डायलर को सेंड किया जा रहा है, वो डायलर उसका एक टोन इमिट करके स्पीकर को भेज रहा है, और वही डायलर उसके बाद ही सेंडिंग अ डिस्प्ले, जो भी बटन प्रेस हुआ है उसको डिस्प्ले कर रहा है ऑन दी डिस्प्ले ऑब्जेक्ट. So now objects are interacting in the system. Just get this sense. Okay, यहाँ और कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं. अब कीप वन थिंग आल्सो इन माइंड, व्हेन आई से ऑब्जेक्ट्स, आई नेसेसरली डजंट मीन कि ये क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं. ऑब्जेक्ट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं. अगर इफ स्पीकर इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, सो इन द क्लास डायग्राम आई हैव टोल्ड यू, इफ यू वांट टू मेक अ ऑब्जेक्ट, यू अंडरलाइन इट, और चाहो तो ऐसे सिंबल के साथ यू कैन गिव द क्लास नेम आल्सो. रिमेंबर, इन द क्लास डायग्राम आई हैव टोल्ड यू, इफ यू वांट टू मेक अ ऑब्जेक्ट डायग्राम और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट का नेम अंडरलाइन रहेगा and you will use this symbol and you will write the class name. For example, Ravi of class student. ऐसे तो बनाते हैं ऑब्जेक्ट, बल्कि इसमें क्या नॉर्मल प्रोग्रामिंग में भी बनाएंगे ऐसे. रिमेंबर ना, ये पढ़ा है हमने क्लास डायग्राम में, राइट? बट हियर यू कैन सी एज अ जनरली के नहीं है सबके साथ. ओके, only the object name is also written in. So what I want to say to you, that when I say objects are interacting in my system, objects are moving inside the system, it doesn't necessarily means कि ये कोई class बनी होगी उसी का object होगा. They can be anything. They can be a normal actor. They can be a book जो कि किसी class को belong नहीं करते हैं. Object का मतलब एक entity से है. When I say object, it means I am referring to a entity that may be from a class, or that may not be from a class also. Okay, anything inside your system that can move is an object for us. Okay, so all these are my objects, right? So this is the example of a collaboration diagram. ये ऐसा दिखता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. Just I want to give you an overview, okay? That here the messages are in, or the objects are interacting with each other through sending messages. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहा है by sending the messages. For example, dialer is send message 5th to connect with the cellular radio. अब जब ये मैसेज इसको भेज रहा है, तो सेलुलर रेडियो रिस्पॉन्स भी कर रहा है, दैट पास और फेल. Got it? So this is the example of a collaboration diagram. Now same diagram, if I want to represent using a sequence diagram, it will be represented something like this. And this is the most popular interaction diagram. It is more popular than the this collaboration diagram. Okay? Collaboration diagram भी देखो, दोनों का काम एक ही है. If we talk, दोनों का काम एक ही है. But collaboration diagram is a kind of, you can say, a rough view. अब यहाँ पे भी देखो, if you have suppose 10 ऑब्जेक्ट्स इन योर सिस्टम, और आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो जल्दी जल्दी सारे ऑब्जेक्ट को रखे, एक दूसरे को मैसेज भेजा, काम खत्म, ये बन गया कोलैबोरेशन डायग्राम. इट विल शो यू आई हैव these ऑब्जेक्ट्स, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर लाइक दिस. ये ऐसे काम हो गया. बट इफ यू वांट मोर क्लीनलीनेस इन योर सिस्टम, और इफ यू वांट टू इंक्लूड द टाइम एलिमेंट, है ना. अब देखो यहाँ पे क्या है, इन दिस कोलैबोरेशन डायग्राम तो नहीं है कि बटन पहले रखा है तो ये पहले इंटरेक्ट कर रहा है. वी आर सीइंग द नंबरिंग, कि जो नंबरिंग है उसके हिसाब से इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि पहले तो एक कनेक्ट बटन भी रखा हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नंबरिंग 1 हो सकती थी, राइट? You got this? What I'm telling you? I'm telling you the difference between collaboration diagram and sequence diagram. If you see this sequence diagram, अभी देखेंगे हम लोग, ये भी same information is, it is also giving you the same information. There is a button object, connect object, dialer object, speaker object, display object, cellular. यहाँ भी सारे चीजें सेम रखी हुई है. But this shows you the time element. कैसे दिखाता है अभी देखेंगे. This shows you कि पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, very very clearly. But this collaboration diagram doesn't shows you this thing with that much clearance. Collaboration diagram simply says you that I have these objects and they are interacting with each other, sending these messages. And if you want to know पहले कौन सा interact कर रहा है, you have to see the message numbering. अगर बटन भी पहले रखा है, कनेक्ट बटन भी पहले रखा है, so it doesn't mean कि कनेक्ट बटन is occurring first. Button object is interacting first because the numbering is 1 here.
and the numbering is 4 here. Got this sense? अभी और clear हो जाएगा when we see the sequence diagrams. So see, this is the same sequence diagram for the earlier one. This is known as a lifeline. सब चीजों के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, बट दिस इज नोन एज अ लाइफलाइन. लाइफलाइन का मतलब होता है कब तक जिंदा रहेगा ये ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल दिस इज माय बटन ऑब्जेक्ट, और ये डॉटेड लाइन में नीचे आ रही है, दिस इज द लाइफलाइन ऑफ द बटन ऑब्जेक्ट. ये है टाइम 0 इन द स्टार्टिंग, और ये फिर टाइम बढ़ता जा रहा है यहाँ पे. सो इफ आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट लाइक दिस, तो लाइफलाइन जो डॉटेड लाइन नीचे जा रही है उसमें द टॉप मोस्ट पॉइंट इज द टाइम 0. टाइम यहां से शुरू हो रहा है और फिर नीचे टाइम बढ़ता जा रहा है. तो अगर मैं मैसेज नंबरिंग नहीं भी दूं, सो कैन आई से विद बाय अ सिंगल लूप दैट ये जो पास और फेल मैसेज है ये इस कनेक्ट मैसेज के बाद जाएगा या आएगा, व्हाटएवर. ये जो एमिट टोन कोड है, दिस सेंडिंग और रिसीविंग फर्स्ट, देन दिस डिस्प्ले कोड मैसेज. मैंने नंबरिंग नहीं पढ़ी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा. आई जस्ट गिव अ ग्लांस ओवर दिस डायग्राम, एंड बेस्ड ऑन दैट ग्लांस ओनली आई कैन से दैट द फर्स्ट मैसेज दैट इज सेंट इज डिजिट कोड एंड द लास्ट मैसेज दैट इज सेंट इज इन यूज. सिर्फ उनकी पोजिशनिंग से. Getting the point? Now I don't have to look at the numberings. जैसे कोलैबोरेशन डायग्राम में हो रहा था कि पहले पढ़ो यहाँ 1 है, फिर 2 कहाँ गया, 3 कहाँ चला गया, 3 यहाँ है. ऐसे ढूंढना नहीं पड़ रहा है. You just give a glance over this sequence diagram and you know that topmost is time 0. यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो रहा है, फिर टाइम नीचे बढ़ता जा रहा है. So just by giving a glance over this sequence diagram, I can say that the first message that is sent is this, second is this, third is this, उसके नीचे ये तो fourth, ये fifth, ये sixth, ये seventh, right? This is how quickly you can read कि कौन सा मैसेज कंट हो रहा है in a sequence diagram. That is why this is most popular, or this is more popular than normal collaboration or communication diagram, because this gives you the time element very clearly through this lifelines. ये lifelines होती हैं इनके थ्रू. Got it? बाकी काम ये भी वही कर रहा है. There is a button object. ये क्या कर रहा है? सबसे पहले ही सेंडिंग अ डिजिट कोड डायलर ऑब्जेक्ट. ये देखो, ये जो इस बार को बोलते हैं एक्टिवेशन बार. बिकॉज सी इफ दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, सपोज बटन, और ये डॉटेड लाइन उसकी लाइफलाइन है, मतलब ये इतने लाइफलाइन में जिंदा है. ये एक डायलर ऑब्जेक्ट है, ये इतने लाइफलाइन में जिंदा है. तो जिंदा तो है, लेकिन व्हेन दिस डायलर ऑब्जेक्ट इज इंटरेक्टिंग और व्हेन इट इज एक्टिव ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ टाइम, दैट इज शोन थ्रू द हेल्प ऑफ दिस एक्टिवेशन बार. ये एक्टिवेशन बार बताता है कि वो इतने पार्ट में एक्टिव नहीं था, वो इतने पार्ट में एक्टिव नहीं है, वो इतने पार्ट में एक्टिव है, वो इतने पार्ट में एक्टिव है. Getting it? So this is my button object. He is sending the first message digit code to the dialer object. Then the dialer object is sending the emit code message to the speaker object. Then the speaker object is sending the display digit code to display object. और ये rectangular box का मतलब होता है loop होता है. वैसे इसको भी बाद में देखेंगे. loops मतलब n digits तक ही चलता रहेगा. नहीं, एक्टिवेशन बार अभी बात करेंगे इसके बारे में और राज, बट एक्टिवेशन बार शोज यू कि इतने टाइम में मेरा इंटरेक्शन एक्टिव है. बस एक्टिवेशन बार, राइट? एक्टिव हूं मैं, इतने टाइम में एक्टिव हूं. उसके बाद में यहाँ हाइबरनेशन मोड में चला जाऊंगा, सो जाऊंगा. यहाँ मैं सो जाऊंगा, यहाँ मैं फिर से जग जाऊंगा, यहाँ मैं फिर से जग जाऊंगा. मैसेज आ जा रहा है, फिर सो जाऊंगा, फिर जग जाऊंगा. ये चल रहा है बेसिकली. सो दिस इज द होल लाइफ टाइम और द होल टाइम स्पैन ऑफ अ डायलर ऑब्जेक्ट. अब इस पूरे लाइफ स्पैन में when this object is activated, कोई इसको कब मैसेज भेज रहा है, ये किसी को कब मैसेज भेज रहा है, that is shown with the help of a activation bar. अब activation bar देखो यहां से, if you see this point, यहां से भी तो एक मैसेज भेज रहा है डायलर ऑब्जेक्ट टू द स्पीकर ऑब्जेक्ट, राइट? यहां से भी मैसेज भेज रहा है. yes or no? राइट? यहां भी एक एक्टिवेशन बार बनेगा. दिस डायग्राम इज फ्रॉम द स्टार यूएमएल, इसलिए ऐसा दिख नहीं रहा है. यहां से भी देखो इतने पार्ट में भी इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहां भी एक एक्टिवेशन बार बनेगा, यहां भी एक एक्टिवेशन बार बनेगा. Okay, if you make this diagram in Visual Paradigm software, these activation bars will be created on both the sides. But Star UML में सिर्फ एक ही साइड क्रिएट होता है, जो जहां मैसेज रिसीव हो रहा होता है. एक हो जाए तो दोबारा शो नहीं होता, बट एक्चुअली में ये ऐसा दिखेगा. तो इसका मतलब है अब दीज पार्ट्स, दीज रिमेनिंग पार्ट्स, इतने पार्ट में डायलर इज नॉट एक्टिव, इतने पार्ट में डायलर ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव, इतने पार्ट में डायलर इज नॉट एक्टिव, और बीच में भी यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए इट इज नॉट एक्टिव, इट इज नॉट एक्टिव.
Getting it? So this is what activation bar shows you, that कितनी देर के लिए और कब तक. अच्छा, one more thing. Sequence diagram definitely shows you that what is the time sequence in which the messages are sent. Like this is sent first, this is second, this is third. It shows you the time sequence, but it doesn't shows you the time duration. Always keep this. And I will ask you this question in exam. Some mid-sem end sem test कहीं ना कहीं ये पूछूंगा in the statements. That does sequence diagram shows you the duration of the messages sent. क्या आपको पता है ये मैसेज कितनी देर के लिए इसके पास है, डायलर के पास, कितनी देर के लिए डायलर के पास है, फिर आगे बढ़ा. ये ड्यूरेशन पता चल रही है डायग्राम को देख के? नहीं पता चल रही है, राइट? दिस स्पीकर ऑब्जेक्ट हैज रिसीव्ड द एमिट टोन कोड. कैन यू से दैट कितनी देर के लिए ये मैसेज रिसीव कर रहा है, या कितनी देर मैसेज अपने पास स्टोर कर रहा है, फिर आगे कुछ भेज रहा है? यू कैन नॉट से द ड्यूरेशन. You can only say the sequence of the time, the sequence of the messages. Keep this thing in mind. I will ask you in the exam. Okay. So this is what sequence diagram is doing. This rectangular box is basically a loop. इसके ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. अभी जस्ट एक एग्जांपल, एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, बट ये सब हम देखेंगे. दिस इज अ लूप. अगर किसी चीज के ऊपर इन सीक्वेंस डायग्राम यू मेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑन समथिंग, इट मींस कि ये चीजें बार बार हो रही है. ऑब्वियसली तुम फोन में नंबर इंटर कर रहे हो, तो एक बार डिजिट इंटर करोगे, उसकी टोन आएगी, वो डिस्प्ले होगा स्क्रीन में. सपोज 9 डाला मैंने, फिर दूसरा नंबर डालोगे 4, तो 4 की टोन आएगी, 4 डिस्प्ले होगा. फिर डालोगे 5, सो 5 डिस्प्ले होगा, है ना? इस तरह यू आर putting 10 numbers. To call someone, you will put 10 numbers. So you have to execute this, or you have to send these messages at least 10 times to call someone, right? उसके बाद ही आगे की कोई बात होगी. So that is why it is a loop till n digits, जब तक यूजर चाहे. ये सब बात करेंगे बाद में. Fine. Then the next message that is sent is from the connect button to the connect button object to the dialer object, that please connect. उसके बाद डायलर ऑब्जेक्ट इज सेंडिंग अ मैसेज कनेक्ट टू द सेलुलर रेडियो ऑब्जेक्ट, और उसके रिप्लाई में सेलुलर रेडियो इज सेंडिंग यू अ मैसेज पास और फेल. और उसके बाद द लास्ट मैसेज इज सेंड, दैट इज इन यूज टू द डिस्प्ले. तो ये होता है सीक्वेंस डायग्राम. द सेम इंफॉर्मेशन दैट अ collaboration diagram is showing you, but it gives you the time sequence or the ordering, a sequence diagram. But a collaboration diagram just gives you the structural organization. It just says you I have these objects, और वो ऐसे ऐसे बात करेंगे. आपको बहुत इंटरेस्ट है कौन कैसे कब बात कर रहा है, तो उसकी नंबरिंग पढ़ो और अपने आप डिसाइड कर लो. अगर एक ऑब्जेक्ट पहले रखा है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके आगे रखा है, तो मतलब ये नहीं है दिस ऑब्जेक्ट विल इंटरेक्ट फर्स्ट, दिस विल इंटरेक्ट सेकंड. ऐसा कुछ नहीं है. नंबरिंग पढ़ो मैसेज की, उसके हिसाब से डिसाइड करो. आई कैन ओनली शो यू दैट आई हैव दीज मेनी ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर सेंडिंग दीज मैसेजेस. बस मेरा इतना ही काम है. आई कैन गिव यू अ रफ क्विक ओवरव्यू. बहुत डिटेल में बात करनी है. इफ यू वांट टू मेक इट मोर क्लियर, यूज टाइम सीक्वेंस डायग्राम, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट की लाइफलाइन के हिसाब से हमें पता चले कौन सा ऑब्जेक्ट कब मैसेज भेज रहा है. ओवरऑल व्यू पता चल गया सबको क्या है. नाउ व्हेन वी विल कंप्लीट दीज डायग्राम्स, बोथ ऑफ देम, your module 3 will be over. Fine. You can say that, Kshitij. Okay, you can say that. But actually ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन को नहीं मिलेगी सीक्वेंस डायग्राम में. इंफॉर्मेशन सीक्वेंस डायग्राम भी उतनी ही देगा जितनी कोलैबोरेशन डायग्राम दे रहा है. But this thing is a more clearer view, you can say, a more ordered view. ये थोड़ा ordered है. ये सपोज कर लो, ये टेबल है जो एक डेटा फॉर्म में लिखा हुआ है. ये एक डेटा है दैट यू हैव रिप्रेजेंटेड क्लीनली इन द टेबल फॉर्म, और वही डेटा यहाँ पे आपने बिना टेबल के रफली रैंडमली लिख दिया है. तो डेटा तो सेम है, जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है वही इन्फॉर्मेशन ये भी दे रहा है, बट दिस इज गिविंग यू अ मोर ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन, मोर क्लियर इन्फॉर्मेशन. पढ़ के चीजें जल्दी समझ में आ रही है. और कोलैबोरेशन डायग्राम में इन्फॉर्मेशन तो वही दे रहा है, क्योंकि डेटा तो वही पड़ा हुआ उसके अंदर, बट दैट इज अनऑर्डर्ड, रफली है, अनस्ट्रक्चर्ड है, अनसॉर्टेड है, बट इन्फॉर्मेशन सेम है. ऐसा नहीं है कि कम इन्फॉर्मेशन देगा, ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा. इन्फॉर्मेशन सेम ही दे रहा है, राइट? इवन इन विजुअल पैराडिग्म, अगर इफ यू क्रिएट अ सीक्वेंस डायग्राम, तो बस डायरेक्टली बाय सेलेक्टिंग वन ऑप्शन यू कैन कन्वर्ट दैट टू अ कोलैबोरेशन डायग्राम. फिर से दोबारा नहीं बनाना होता, क्योंकि एक ही चीज है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, राइट? सो बेसिकली कैसे यूज कर सकते हैं इसको? सपोज यू हैव गॉट वन क्वेश्चन दैट यू हैव टू मेक अ सीक्वेंस डायग्राम. तो सीक्वेंस डायग्राम में थोड़ा सा टाइम लगेगा,
थोड़ा देख समझ के बनाना पड़ेगा. बट इफ यू वांट टू रफली गेट अ क्विक ओवरव्यू, that just directly first let me tell how many objects are there और कौन क्या मैसेज भेज रहा है. So you make one collaboration diagram, सारे ऑब्जेक्ट्स बना लो जल्दी जल्दी, कैसे भी कहीं भी रख के, और एक दूसरे को मैसेज भेज दो जो भी भेज रहे हैं. उसके बाद उसको देख के यू कैन मेक द सीक्वेंस डायग्राम slowly, slowly taking the time. Got it? So till this point, okay, till when we will cover complete the sequence of collaboration diagram, your module 3 will be over. Till this point, for now is your midterm syllabus. इसके बाद का अगर स्टार्ट भी कर दूंगा बिफोर मिड सेम, आई डोंट थिंक आई विल आस्क यू दैट. उसके बाद के दो मॉड्यूल्स वी विल हैव इन द एंड सेम. वन मोर टेस्ट यू विल हैव बिफोर द मिड सेम, एंड दैट विल बी अ सरप्राइज टेस्ट. आई विल नॉट इन्फॉर्म यू बिफोर हैंड, वो कभी भी मैं ले लूंगा. ओके, जस्ट बी रेडी विद दैट. इसे बता दिया तो सरप्राइज रह नहीं गया, बट स्टिल, सो दैट अगर किसी ने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे, जस्ट स्टार्ट वॉचिंग देम. ओके, सारे रिकॉर्डिंग्स आपके अवेलेबल है. या क्षितिज, अप टू दिस मॉड्यूल विल बी योर मिड सेम सिलेबस फॉर नाउ. इससे ज्यादा, इससे कम ही होगा, अगर होगा तो वैसे कम भी नहीं होगा, इतना ही रहेगा टिल मॉड्यूल 1 2 3. दैट विल बी योर मिड सेम सिलेबस. ओके, अब इसे बता दिया है. अभी तक हमारी कितनी क्लासेस हुई हैं? 3 3 6 3 9 11 12 13 14 15 16 17, अराउंड 17 18 क्लासेस. आज 18th क्लास है आई थिंक, है ना? 17 या 18th क्लास है. तो स्टार्टिंग का एक या दो रिकॉर्डिंग छोड़ के जो बेसिक्स था उसमें शायद रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, उसके बाद की सारी रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल. सो जस्ट वॉच दैट, है ना? धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, जस्ट वॉच दैट एवरीवन. चाहे आपने क्लास की हो चाहे ना की हो, डजेंट मैटर, बट कंप्लीट द रिकॉर्डिंग्स बिफोर सिटिंग फॉर द एग्जाम. लाइव क्लासेस हो सकता है, नेट इश्यूज हो, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड. बट दैट इज व्हाई, दैट इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लास, राइट? यू हैव द रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल विद यू. सो फास्ट कर करके देख लो जल्दी जल्दी एक बार सारी चीजें. एंड फॉर योर लैब एग्जाम विच यू हैव नेक्स्ट वीक, इट विल बी बेटर इफ यू जस्ट डाउनलोड. अब उसके लिए रिकॉर्डिंग देखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मतलब है तो देख लेना. बट बाकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू, डाउनलोड द पीपीटीज ऑफ ऑल द डायग्राम, यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, पैकेज इंटरफेस, एक्टिविटी डायग्राम, सारी पीपीटी दो, और इसके एग्जांपल्स देखो. एग्जांपल्स कम पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन और एग्जांपल्स देखो. सी द एग्जांपल्स मोर rather than anything else. Okay, your diagrams basic souls should remain contact. The structure should be same. स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, दैट इज एक्सेप्टेबल टू मी, नो इश्यूज, बट डायग्राम का स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ना चाहिए. फाइन. So we have 7 minutes. Okay, let's just start with sequence diagrams. So first we will see the sequence diagrams, then we will see the collaboration diagrams. ऐसे कुछ नहीं है कोलैबोरेशन डायग्राम में, वही है बॉक्स ऑब्जेक्ट्स बनाने, ऑब्जेक्ट्स में मैसेज भेजने, बस इतनी पावर भी है कोलैबोरेशन डायग्राम की, इससे ज्यादा उसके पास कुछ है भी नहीं. बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सीक्वेंस डायग्राम. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट आल्सो. Okay, so see, in the sequence diagram, the first thing that you have to do is the objects. Okay, this is how the objects will be represented. Fine. Yeah, in your star UML, okay, or visual paradigm, this is the representation like lifeline. You click on that, you paste it here, so ऐसे rectangular box आ जाएगा with dotted lines. This dotted line you can increase also. This rectangular box shows you the object. Here you can write the object name. So if you want to show that this object is a class object, so you write it like this. Suppose this object is student. This is from a class hello. So you can write it like this. If you want to show that this object is of class student. If you don't want to write this, if you just want to write the object name, you can write directly like student. Right? Even you can have actors as an object. है ना? यहाँ पे UML sequence diagram, you can make an actor also. That okay, this is an actor. उस actor की भी lifeline होगी. Everything will have a lifeline in the sequence diagram. Because if this actor wants to send one message to some other object, he has to do it through its lifeline only. सबकी lifeline होगी, चाहे actor हो चाहे object हो. बल्कि ये actor का ऐसे symbol नहीं बनाना है, so you can create this part actor in the rectangular box, और यहाँ पे लिख सकते हो stereotype
actor. Because I think star UML, this symbol is not present for actor in the sequence diagrams. Okay, so if you want to make an actor, if you want to show that this is not a normal object, this is an actor, this is a real person, so you can write the person name. और क्या कैसे बनाए इसका actor? अगर नहीं है कोई चीज तो कैसे बनाते हैं UML में? Tell me the term. If you don't have a particular diagram or a structure, we use stereotype, right? Good. We use stereotypes. So if you don't have the symbol of actor in the star UML for a sequence diagram, you normally write in a box that this is the actor name, and you write in these guillemets that this is the actor. So this will become actor. Fine. Now this is the message. A message के भी बहुत से types होते हैं. We will see them. But this is a message, and this is showing that participant 1 is sending the message to participant 2. अब यहाँ देखो, अभी जो हमने पीछे डायग्राम देखा, दिस डायग्राम, यहाँ पे इफ दिस पर्सन वाज सेंडिंग यू अ मैसेज, यहाँ पे एक्टिवेशन बार नहीं बन रहा था, यहाँ पे एक्टिवेशन बार नहीं बन रहा था, राइट? बेसिकली इफ यू सी हियर, यहाँ पे भी एक्टिवेशन बार बन रहा है और यहाँ पे भी एक्टिवेशन बार बन रहा है. सो दिस डिपेंड्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन विच यू आर मेकिंग these diagrams. But if a message is getting sent from this to this participant or from this object to this object, this shows that participant 1 is active during this time frame and participant 2 is also active during this time frame. मतलब पहले यहाँ पे ये लोग खाली बैठे थे, सो रहे थे, यहाँ पे ये लोग खाली बैठे थे, सो रहे थे, इसके बाद ये लोग यहाँ खाली बैठे हैं, यहाँ पे भी खाली बैठे हैं. They are not active. That is the meaning of activation bar. ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है. इसका वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है बहुत ज्यादा सीक्वेंस डायग्राम में, बिकॉज यू नो दैट दिस टाइम जीरो, दिस इज टाइम जीरो. और जैसे जैसे लाइफलाइन नीचे बढ़ती जा रही है, जिंदगी जैसे जैसे बढ़ती है, यहाँ पे ये लोग पैदा हुए हैं टाइम जीरो पे, उसके बाद एज बढ़ती जा रही है. टेक इट लाइक दैट. ओके, पार्टिसिपेंट 2 जो है, ही हैज बोर्न एट दिस पॉइंट, यहाँ पे ये इसका बर्थ हुआ है, और उसके बाद उसका टाइम फ्रेम आगे बढ़ता जा रहा है, वो बूढ़ा होता जा रहा है आगे बढ़ते बढ़ते. जब डेथ हो जाएगी तो एक क्रॉस मार देंगे कि नाउ इट इज डेड. गेटिंग? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफलाइन? दैट दिस ऑब्जेक्ट, बताओ तुम लोग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफलाइन? So what do you get? What sense do you get of lifeline? क्या है lifeline for you? ठीक है. Age of the object, right? You can say age of the object, Harshit. Not only age of the object. Or this is the time frame during which object will send messages or receive messages. Yeah, that's right. Object is created and stay alive for a certain time. Active or inactive time span of the object. Yeah, right. Starting and ending. So basically, lifeline is a time duration during which an object can send messages, can receive messages, can do whatever he want, but only during his lifetime only. And when his lifetime will be over, you have to destroy that. Now there are certain types of messages, है ना? ये इसको मैसेज भेज रहा है, तो यही थोड़ी कि बस इसी एरो के साथ मैसेज भेजेगा. This is not the case. So there are a lot of type of messages. This is the last slide for today. So see, suppose you have one object and you have another object. So the first kind of message is synchronous message. इसका सिंबल होता है ये लाइन विथ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. जो जनरलाइजेशन का सिंबल होता है इन अ यूज केस डायग्राम, द सेम सिंबल is used for synchronous message. तो synchronous message का मतलब ये होता है, if this is object 1 and this is object 2 and object 1 is sending a synchronous message to object 2, it means that object 1 wait कर रहा है कि उसको कोई रिटर्न मैसेज भी मिले. synchronous message का मतलब होता है it is in sync with this object. Now it is expecting some reply from object 2 also. अगर इसने object 2 को एक synchronous message भेजा है, so it is accepting some reply also. तो ऑब्जेक्ट 2 को उसको ये रिटर्न मैसेज भेजना ही पड़ेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनस मैसेज. मतलब ये स्टैंड अलोन नहीं हो सकता है कि भेज दिया और भूल गए. अगर आपने सिंक्रोनस मैसेज सेंड किया है किसी को भी, सो यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई फ्रॉम दैट पर्सन. गॉट इट? इसकी जगह असिंक्रोनस मैसेज भी होता है. सपोज ऑब्जेक्ट 1 वांट्स टू सेंड मैसेज टू ऑब्जेक्ट 2 बट रिप्लाई नहीं चाहिए, तो इसके लिए असिंक्रोनस मैसेज होता है ना? यहाँ पे इट इज नॉट विजिबल बट दिस इज द सिंबल लाइन विद अ एरो.
जो डायरेक्टेड एसोसिएशन का होता है यूज केस डायग्राम में। सी द सेम सिंबल्स इन द यूज केस डायग्राम, इसका मतलब कुछ और था, इसका मतलब कुछ और था। इन द सीक्वेंस डायग्राम सडनली मतलब चेंज हो गया। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर लैब एग्जाम, वेयर बिग रेक्टेंगल स्मॉल रेक्टेंगल, ये तो एक्टिवेशन बार ही है, ऐसा कुछ नहीं है, तो साइज इसका बड़ा कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये ऑब्जेक्ट वन होता, ये मैसेज भेज रहा हो तो ऑब्जेक्ट टू हो, तो स्टार्टिंग में रेक्टेंगुलर ऐसा बना होता, जो यहाँ पे इतना बड़ा दिख रहा है ये स्टार्टिंग में ऐसे छोटा सा बना होता। फिर जब इसने वापस इसको रिप्लाई भेजा तो हमने इसका साइज ऐसे बड़ा कर दिया थोड़ा, ताकि दिखे कि इतने पार्ट में एक्टिव है, तो आप चेंज हो जाता है अपना जो मैसेज भेज रहे हो। मतलब सेम है, रेक्टेंगल का मतलब सेम है, दैट दिस इज एक्टिवेशन बार। अब यहाँ पे दो मैसेज जा रहे हैं ना, यहाँ पे एक मैसेज ये जा रहा है, एक मैसेज वापस भी आ रहा है, तो इसलिए रेक्टेंगुलर को साइज थोड़ा छोटा कर दिया। यहाँ से देखो सिर्फ छोटा सा एक मैसेज जा रहा है, अगर वापस भी इसमें इस जगह कोई मैसेज आ रहा होता है ऐसे, तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते, ताकि सब कवर हो जाए। गेटिंग इट? चलो इसको आई थिंक वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट, एनीवन? चलो फिर वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। And for your labs, prepare, okay? Just see the diagrams once. I was telling you this, that in the use case diagram, this was a directed association. So Rashil, if you are logging after 9:10, then also your attendance will not be shown or reflected. Okay, I have your attendance also with me. Don't worry. जिसकी बहुत ज्यादा कम है उसकी मैंने बोली थी क्लास में, और जिसकी कम होती जाएगी आई विल नॉट टेल यू, आई विल सी डायरेक्टली डिबार यू। मैं क्यों बताऊं? यू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरीवन। इफ यू आर अटेंडिंग योर क्लासेस, बी वेरी श्योर आई विल टेक केयर, है ना? सारी रिपोर्ट जनरेट होती है मेरे पास। बट लॉग इन बिफोर 10 ऑल्सो, अगर 10 के बाद लॉग इन करोगे तो आपको अटेंडेंस पोर्टल पे नहीं दिखेगा। मेरे पास तो रहेगी अटेंडेंस, बट अटेंडेंस पोर्टल पे नहीं दिखेगा। सो लॉग इन बिफोर 9:10 एंड आफ्टर 9। या फाइन solution, no issues, you keep on attending the classes, rest I will see. What usual in use case we can use dependency between cases, where in use case no 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 no, you can use, देखो ऐसा नहीं है जो मैंने बताया कि डायरेक्टेड एसोसिएशन यूज नहीं कर सकते, बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी नीड ही नहीं है, देर इज नो नीड, राइट? डिपेंडेंसी एरो भी होता है, यू कैन शो दैट दिस यूज केस इज डिपेंडेंट ऑन दिस यूज केस, बट उसका मतलब क्या है? डिपेंडेंसी सिर्फ दो टाइप की हो सकती है यूज केस डायग्राम में, आदर दैट इज इंक्लूडेड और दैट इज एक्सटेंड। सिर्फ दो ही टाइप की डिपेंडेंसी पॉसिबल है, सिर्फ नॉर्मल डिपेंडेंसी डजंट मेक सेंस, दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू डोंट मेक एनीथिंग लाइक दैट, right? Because on paper, when your diagram is converted, if you have shown this directed association, it doesn't look like directed association. It looks like a generalization. कि ये parent class है, ये child class है, for a use case diagram. Getting it? What is include? ये एक dependency वाली line पे ही तो include stereotype लगा हुआ है। कोई यूज केस किसी दूसरे यूज केस पे कब डिपेंड हो सकता है? या तो वो उसको इंक्लूड कर रहा हो, या तो एक्सटेंड आ रहा हो, यही दो चांसेस है, राइट? क्लियर? या नो इश्यूज अर्जुन। एवरीवन जस्ट कीप ऑन अटेंडिंग द क्लासेस, है ना? अटेंडेंस पोर्टल में कुछ भी शो रहा हो, डोंट वरी, आई हैव योर अटेंडेंस विथ मी, सबकी अटेंडेंस है मेरे पास। And the second way to show that you are attending all the classes is giving the test and submitting assignments on time. Is there any student, मेरे ख्याल से है एक student है, I think, who hasn't submitted the assignment and hasn't given the test also, दोनों चीजें नहीं की, तो that then it doesn't make sense that you are attending the class or not. Submit your assignments and tests on time, proof रहना चाहिए ना भाई कर रहे हो चीजें, सिर्फ क्लास में लॉग इन करके बैठना इज नॉट अटेंडेंस। अरे बता दो कुणाल, यू आर अटेंडिंग द, हाउ मेनी असाइनमेंट्स यू हैव सबमिटेड कुणाल फॉर योर लैब? Total out of 6 assignments, how 5 assignments, how many you have submitted? You have submitted all the 5?
You have submitted all the 5 assignments? हाँ तो 4 सबमिट किया तो ठीक है. You are attending the labs. Keep on submitting है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब you are not submitting. You will get less marks in your attendance. Attendance की इतनी टेंशन मतलब I have the attendance of everyone with me. Fine. Any more doubts? Anyone? Everyone just keep on attending the classes, submitting your assignments, and giving your tests. Rest I will take care of your attendance. You don't have to worry regarding that. No, no, you have to draw diagrams, Mansi. I'll give you some 3 to 4 questions. You have to draw the diagrams on UML and submit. Quiz नहीं होगी. Quiz भी लूंगा लैब में, बात की बात है वो. फिलहाल you have to give your प्रैक्टिकल एग्जाम ना. लैब का प्रैक्टिकल कैसे होता है? जैसे कोडिंग करते हो वैसे डायग्राम बनाओगे. जो अभी तक करते आ रहे हो वही करना है. सेम थिंग यू. Any more doubts? Anyone? So just prepare for your lab. Okay? What you have to prepare? See the diagrams examples. Use case diagram के 4 से 5 examples देखो. What are the relationships? Check them, see them. क्लास डायग्राम्स में क्या क्या रिलेशनशिप्स है, एग्रीगेशन कंपोजिशन क्या क्या पढ़ा है उसको देखो, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ये देखो. बस गलत जगह अप्लाई मत करना. अप्लाई नहीं करोगे तो भी चल जाएगा बट गलत जगह अप्लाई मत करना. स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए. ओके, सो जस्ट सी द रिलेशनशिप्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर डायग्राम्स. फाइन, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन. On Tuesday it will be for B1 and on Thursday it will be for B2. And everyone जो भी अभी लैब कर रहा है, नहीं कर रहा है, मिस कर रहा है, कुछ कर रहा है, you have to give your lab exam between 9 to 11 only. Last time to submit the assignment or that lab test will be 11:30 only. उसके बाद किसी का भी submit नहीं होगा. If you have any issues with Blackboard या ऐसा कुछ होता है, you can mail me before 11:30 on Tuesday your assignment. That will be accepted. अगर अपलोड करने में कोई इश्यू आ जाए, ऐसा कुछ होता है तो. But nothing for any reason whatsoever. No assignment or test will be accepted after 11:30. बोल मुझसे. It's your responsibility. पहले एक हफ्ता पहले ही बता दिया. Be prepared with that. कोई एक्सक्यूज नहीं. चलो, थैंक यू.